Hello everyone. So today we are starting with new chapter, and in this chapter we will be starting with the first video of C++ character set and tokens. Now C++ character set is a very important topic in regard. It is though very simple. So what it is? Now when you prepare a C++ program, now we have done the hello program and we have seen how it works. Whenever you prepare a C++ program, what happens? It consists of source code, which consists of variables, identifier, escape sequence, constants, expressions, and many more things you can see. Now, all these particular things that you have used in a program, variables, identifiers, are mainly made from a character set that is a building block of the source code. This character set is mainly composed of letters, numerals, various symbols, and white space characters. So these symbols, you have these particular characters, symbols you have used in the basic program, and all these things you have seen in hello program also. Maybe some of them might not be visible at that time because the program was very small. So letters come uppercase and lowercase because they are different. C is a case sensitive language, so both have to be included and both have different meaning. Then numerals include 0 to 9, and these numerals are used occasionally. Then 29 different symbols that are supported on the keyboard also that you can type. There are certain special characters known as white space characters, and we will be entering them with the help of escape sequences. We will be learning about that. It also includes four printable characters such as null character, alert, backspace, and carriage return. All these are escape sequences. We'll be discussing about that. So white space characters and non-printable characters are represented in character and string literal using escape sequence. As I'm telling you that these are normally not typed with the help of keyboard, but they are normally used with the help of escape sequences. So the C++ character set, actually all these things, identifiers, variables, various literals, operators, yet everything that you use in your program is token. So so character set is used for writing C++ token. Now all of you know that in a program you write code in the syntax of that language. That is, in C++ it is usually written in general English because its syntax is taken from C, and C has most of its syntax from general English alphabets and characters. But computers can understand only binary numbers. So there has to be some mechanism so that the typed characters can be encoded, and each matched character can be converted into its appropriate binary or hexadecimal numbers that the computer can understand. For this, we need to be aware about encoding schemes. Now, generally, when the computers started, the basic encoding scheme that was used was the ASCII, that is American Standard Code for Information Interchange, and it was the basic standard that was used. Then it supported 128 different characters because it was 7-bit, and later it was expanded to ASCII 8, and it was made to support 250 characters, and this character encoding was normally known as Latin 1. And nowadays, as we are dealing with multiple languages, for that it was further enhanced, and Unicode, that is universal code, was made. UNICODE and E. So this format is specifically used when we are dealing with multi-languages format. And most Linux-based C++ compilers have their support for UTF-8 character set, which is a type of Unicode character set that helps to work with multiple languages. So the choice of your character set and encoding is largely dependent on the platform and the specific requirement of the application. So if you are not able to find it one, then you can think of, depending upon your platform, it will vary. So you can have all the programs made using this C++ character set, and in fact the C++ is the main constituent of tokens. So next we start with what are C++ tokens. Now a token is the smallest independent unit in C++ program that is meaningful to the compiler. By meaningful, I mean
दैट इट कैन बी अंडरस्टूड एंड प्रोसेस। मतलब आपके पास प्रोग्राम का सबसे छोटा यूनिट जो कंपाइलर को समझ आता है वो होता है टोकन। टोकन ही होता है जो कंपाइलर उसको समझ के उसको इंटरनली कन्वर्ट कर सकता है। तो टोकन्स में आते क्या है? एनी आइडेंटिफायर्स, जैसे कि आप जो वेरिएबल्स के नेम या कोई भी क्लास के नेम या कोई भी ऐसा प्रोग्रामर आइडेंटिफायर जो आप फंक्शन के नेम, ये सारे क्या होते हैं? आइडेंटिफायर। देन आते हैं कीवर्ड्स। हमारे पास अलग अलग कीवर्ड्स हैं, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं और उनका क्या मतलब होता है, रिजर्व्ड वर्ड्स उनको कहा जाता है। फिर हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स वेरियस ऑपरेटर्स, जो कि हम सिंबल जैसे दो बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनिटरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेटर्स प्लस माइनस इस तरह के हम पढ़ेंगे। पंचुएटर्स, ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ग्रुप करने में हेल्प करते हैं प्रोग्राम में, जैसे हम फंक्शन के आगे पेरेंथेसिस डाल सकते हैं या असाइनमेंट करने के वक्त हम ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, एरेज में हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, फिर कॉमा को हम यूज कर सकते हैं ग्रुप करने में। तो ये कुछ पंचुएटर्स हैं। और प्री प्रोसेसर्स, आपको मालूम है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में यूज होते हैं। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में हमें याद हो कि हमने जब कंपाइलिंग वाला लेक्चर सुना था तो उसमें हमने देखा था कि स्टेप्स में सबसे पहले प्री प्रोसेसर, कंपाइलिंग से भी पहले प्री प्रोसेसर पिक्चर में आता है और आपके प्रोग्राम में प्री प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो उसको हमें लिखने के लिए हैश के साथ सभी सिंबल डालते हैं, हमने उनकी डिटेल थोड़ी सी पढ़ी थी। उसके बाद लिटरल्स, लिटरल्स बेसिकली एक कॉन्स्टेंट्स की तरह होते हैं जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें हम कोई भी नंबर, स्ट्रिंग ऐसा या कैरेक्टर कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस बात से हम यहाँ पे लिटरल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता क्या है? कहता है टोकन्स क्या स्टोर भी होते हैं कंप्यूटर में? नहीं, कहता है टोकन्स आर नॉट स्टोर्ड। मतलब टोकन स्टोर नहीं होते, बट जो जब भी कंपाइलर अपनी प्रोसेसिंग करता है इनको रीड किया जाता है सोर्स कोड को। फिर कंपाइलर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कंपाइलेशन प्रोसेस, जब वो कंपाइलेशन करता है वो जितने भी सी प्लस प्लस टोकन्स होते हैं जो कि प्रोग्राम या सोर्स कोड में आ रहे होते हैं उनको पार्स करता है और इनटू स्ट्रीम्स ऑफ टोकन यूजिंग लेक्सिकल एनालाइजर। यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर की मदद के साथ वो इनको पार्स करके एक स्ट्रीम ऑफ टोकन्स बनाता है। जैसे अगर आपके पास इंट वाला हेलो वाला प्रोग्राम है तो उसमें एक हैश, उसके बाद उसमें इंक्लूड, उसके बाद आईओ स्ट्रीम, फिर एंगल ब्रैकेट्स, एनीथिंग जो भी आपको हम टोकन क्या कह सकते हैं, जो भी आप जैसे हैश एक सिंबल है, इंक्लूड है की इंक्लूड है, आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है, यूजिंग कीवर्ड है, तो इन सभी को अलग अलग करता है। और इनको जब कंपाइलेशन प्रोसेस शुरू होती है टोकन्स में, सी प्लस, जब भी इसको प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है तो सी प्लस प्लस टोकन्स आर पास्ड इनटू स्ट्रीम्स ऑफ टोकन इन यूजिंग लेक्सिकल एनालाइज। फिर क्या होता है? इट रीड्स द सोर्स कोड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड ग्रुप्स देम इनटू टोकन बेस्ड ऑन द सिंटेक्स रूल ऑफ द लैंग्वेज। तो उनको ग्रुप कर दिया जाता है और उसको रूल्स ऑफ द लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और जो रिजल्टिंग स्ट्रीम होती है दैट इज पास टू द पार्सर। तो पार्सर को हम पास करते हैं जो कि एनालाइज करता है इसको, तो कि सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्राम जैसे भी रूल्स और ग्रामर्स ऑफ द लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली वैसे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो ये हम जनरली प्रोसेस फॉलो करते हैं और इसमें कैरेक्टर सेट और टोकन्स का रोल होता है। तो हम आगे देखेंगे कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि आगे हम आइडेंटिफायर्स या और भी चीजें पढ़ेंगे, सभी के अंदर टोकन्स ही यूज हो रहे होते हैं। तो इस तरह हम आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।